Welcome to the Probe's Podumentary. Our Podumentary is a series of audio documentaries on topics and stories that matter to people and are part of a public interest journalism in India. You're listening to me, Prema Sridevi. Here is a new episode of a Podumentary titled Silent Spectators: How Society's Conscience Fails Victims of Violence. In early May, after violent clashes between the Meitei and Kuki tribes in Manipur, a shocking incident rocked the nation. Two women became victims of a horrifying act of violence when they were stripped naked and paraded by a group of men. The disturbing video of the incident quickly went viral, showing the women being assaulted, groped, and forced to walk towards an empty field. This disgraceful act not only brought shame to the entire country, but also triggered a heated national debate, sparking outrage among the public. Sadly, such incidents are not isolated cases. In the 21st century, India continues to witness distressing incidents where women are stripped of their clothes and dignity, while law enforcement agencies remain passive spectators. Listen to Advocate Tej Pratap Singh, who speaks about another distressing event that took place on Republic Day in India's national capital last year, where a woman suffered a similar fate. She was brutally beaten up by dozens of men, her head was tonsured, she was allegedly gang raped, her face was blackened, a garland of shoes was forced on her neck, and she was paraded on the streets of Delhi. The accused, they have a thought process, they have a thinking that their son did a suicide, he attempted suicide and he died, and that is because of this girl. She, along with her husband and her son, who was around, I guess, 1.5 years old at that time, they went away and they started residing in a village and they didn't tell anyone. And somehow, after 2 months, on 26th of January, when she went there in Karkaduma village in her residence, in order to get some daily necessary items. So these accused persons, they followed her. And a bunch of accused were following her. The moment she came down in the street in order to receive all the items which were brought by her sister, they just grabbed that girl and started beating her. Around 20 or 30 people, they started beating her. They started dragging her. They even started cutting her hair on the Karkaduma village, on the street of the Karkaduma village. And somehow they were able to drag her into that three-wheeler in that auto, and they took her, abducted, and they took her to the Kasturba Nagar. They took her into a small room. That room was full of those accused. Some of the accused were guarding the gate. They literally tried to kill her. They shaved her all hair cleanly. They cleanly shaved her head. They beat her with rubber pipes, sticks, plastic sticks, those which are used for pipelines. And for God's sake, they were not having iron rods, otherwise they would have killed her with that. They teared her clothes, and the male minors who were present in the room, that minors are coming with their private parts open and they are trying to enter it into her mouth. And other ladies who are sitting beside her, they are holding her mouth, they are holding her hands, they are beating her, and they are also trying that the attempt of 376 that is rape, could be conducted with that girl, with the victim. After that, when they were not satisfied with all the acts which they had done to that girl, they put all the ink on her face, they put a garland of shoes in her neck, and they started a parade in the streets of Kasturba Nagar. In all the streets, they paraded her. Along with that, all the ladies, all the accused were, some of them were also hitting her during the parade. It is very visible in the videos if you have that. The victim of the shocking incident has not found relief even after the terrible trauma she was subjected to. Her lawyer reveals
that she faced bullying from both her attackers and their legal representatives during the court proceedings. The case is still ongoing and the victim is yet to receive justice. I am very thankful that you have given me this platform. I was really fed up with some of the things which are going not well in the court during the proceedings. Main thing is that the girl is being chief examined and her cross-examination is going on, and this sensitive case where all the relatives of the accused, they are sitting outside the courtroom and the girl has to cross that way. Whenever she crosses, she has told me that she is being bullied by them. They are commenting on her. They are again threatening her. The relatives of the accused, the lawyers of the accused person, sometimes they really made a mess. They really made a mess in the courtroom by shouting. The Manipur incident has emerged as a critical turning point, compelling the nation to acknowledge the alarming brutality women face in our country. Dr. Chinkhanlun Guite, the spokesperson of the Manipur Tribals Forum Delhi, emphasizes that Manipur has witnessed numerous such incidents in the past, with the region still grappling with horrific crimes against women. However, the situation escalates when the government takes sides, openly displaying support for a particular community, and thereby becoming a party to the crime. They are not the only victim. We have more victims out there, which has not come out yet. So in the 90s, there were some stories. I mean, like not stories. There were an event which were retold to us as a young kid, which we hear saying that the Métis, not the Muslims, the Métis, they didn't even spare a newborn baby. You know what I heard was that they took the newborn baby and smashed it against electric posts and all those things. So that is the kind of brutality we heard in the 90s. Now coming fast forwarding today, you must have heard of the news of burning a 7-year-old boy along with his mom and his aunt. See, the brutality sometimes come out of what kind of society you live in, and social consciousness, or you can say the society's moral obligations. Now, if you look at the recent events, you will hear a lot of mentally retarded people being killed, and elderly being killed, and children being killed. See, as long as you look at the events that have been occurring, it's not lapses, it's a blatant abuse of power on the part of the state government. The state has a very strong law and order enforcement agencies. But right now, what happened is that the state forces, if you look at the state polices, the state commandos, they are all acting against a particular community. There are proof that the state government did act against the community at large. During our interview with Anand Sharma, the Superintendent of Police of Alwar in Rajasthan, he recounted a disturbing incident he witnessed while serving in Banswara in Rajasthan. In 2017, a shocking event unfolded when a village panchayat ordered the naked parade of a minor girl and a boy. The incident sent shockwaves through the state of Rajasthan at the time, but unfortunately, it soon faded from public memory. देखिए, ये 2017 का मैटर है और पुलिस थाना कलिंजरा है, बांसवाड़ा जिले में वहाँ का है। तो ये जो लड़का लड़की है, ये बेसिकली एक ही फैमिली से थे, मतलब ये कजिन्स थे, वैसे गोत्र भी सेम था, और ये जो है दोनों का अफेयर था, और जब घर वाले लड़की की शादी कहीं और करना चाहते थे, देन दे इलोप। तो इनकी फैमिली ने इनके इलोपमेंट के संबंध में या इनके जाने के संबंध में कोई भी रिपोर्ट या कोई मिसिंग रिपोर्ट या कोई एफआईआर पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी, और वो इनको अपने ही लेवल पर जो है ना ढूंढते रहे, और ये फिर उनको गुजरात में ये कहीं जाकर के वहाँ काम करने लग गए थे, वहां पर ये मिले।
तो मिलने के बाद जो है फैमिली उनको अपने गांव में लाई एंड दे वांटेड टू टीच देम अ लेसन। और मतलब उनका ये कहना था कि हम पूरे गांव को और समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई हरकत करेगा तो उसके साथ क्या होगा। तो वो एक पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में इनको ह्यूमिलिएट किया गया और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इनको न्यूड करके और इनकी एक परेड निकाली जाएगी। तो इन दोनों को न्यूड किया गया और उसके बाद गांव में पूरे गांव में इनकी परेड निकाली गई। और उस परेड को निकालने के बाद ये हुआ, क्योंकि एक बिल्कुल ट्राइबल इलाका है, और उसके बाद इन्होंने उसी दिन रात में जो लड़की है उसकी तो शादी करके किसी लड़के के साथ और उसको विदा कर दिया। और जो लड़का है वो बुरी तरह से इंजर्ड था पर वो बहुत डरा हुआ था, तो उसको इन्होंने उसके घर में ही छोड़ दिया। तो ये वीडियो वायरल हुआ और ये हमारे संज्ञान में आया। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में वीडियो आया, हमने तुरंत इस घटना के बारे की रियलिटी पता करी और हम उस गांव में गए। तो वहां पे इसमें कोई भी इसके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि गांव ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया था कि वील नॉट से एनीथिंग। तो हमने ऐसे पुलिस की तरफ से इसमें एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके हमने सबसे पहले तो उस लड़के को उसके घर से बाहर निकाला। वो बहुत इंजर्ड था, उसका इलाज कराया। फिर उसको जब हमने हिम्मत दी थोड़ी सी, तो लड़के ने पूरी घटना हमको नरेट की, उसके बयान हमने रिकॉर्ड किए। फिर हमें पता लगा लड़की कहाँ है, तो हम लड़की को भी रेस्क्यू करा के लाए और जो लड़की है फिर उसका भी मेडिकल कराया गया, उसका इलाज कराया गया और उसके बयान रिकॉर्ड किए गए। और चूंकि लड़की उस समय माइनर थी, उसको सीडब्ल्यूसी के पेश करके जो नारी निकेतन होता है वो वहां गई और लड़के ने कहा कि मैं भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तो लड़के को भी जो इस तरह का एक शेल्टर होम है वहां पर भेजा गया था। In a shocking incident reported this month from West Bengal, 2 women found themselves at the center of accusations of theft, leading to a distressing display of violence and degradation. A mob descended upon the women, mercilessly stripping them naked and beating them, while numerous onlookers stood by as silent witnesses to the appalling crime. These incidents are not isolated occurrences, but rather a grim reminder of the disturbing realities that persist in the country. अगर मणिपुर के लिए बात करें तो कहते पश्चिम बंगाल की घटना के लिए आप क्यों नहीं बोलते। 2 वुमेन जिनके ऊपर आरोप था कि वो चोरी कर रही थी और चोरी किया, उन्होंने बताया गया कि चोरी की है और उसके बाद वहां लोगों ने पकड़ा। और सबसे सैड बात यह है कि इसमें फीमेल महिलाएं भी शामिल थी और वो भी इसमें शामिल थी। इनको स्किप किया गया, उनको मारा गया, उनके साथ जितना उनको असॉल्ट कर सकते थे वो किया गया। 18 जुलाई की घटना है। अचानक से कुछ लोगों ने इनको पकड़ा और कहा कि ये पैसे चुरा रही थी लोगों के, और उसके बाद से इनके ऊपर मार पिटाई शुरू हो गई। इनके कपड़े फाड़े गए, इनको न्यूड करके परेड किया गया इनको वहां लोगों के सामने। और लोग तमाशा ही बन के वहां देखते रहे, तमाशा देख रहे थे, वीडियो बन रहे थे और ये वीडियो वायरल होके घर घर हर मोबाइल में पहुंच रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो शुरू हुआ है कि आप कानून अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह की घटनाएं आप अंजाम देते हो, खासकर तब जब महिलाओं के साथ ये होता है, उनको पब्लिकली जिनकी इतना उनको शेमिंग किया जाता है, स्ट्रिप किया जाता है और उसके वीडियो बना के उसको वायरल किया जाता है। ये एक ऐसी घटना है जो जाहिर है कि कई सवाल खड़े करती है कि पुलिस कहाँ थी उस वक्त, पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया। और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो फिर कोई आगे बढ़ता क्यों नहीं। इस केस में हालांकि एक जो एक सिविक वॉलंटियर थी उसने रोकने की कोशिश की थी, फीमेल थी, उसने रोकने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त उसको कोई साथ नहीं मिला, लोगों ने नहीं दिया। लोग तमाशबीन थे, लोग वीडियो बनाते हैं, कोई इस हालात में आगे नहीं आता है। तो ये सिर्फ कानून लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी अपनी सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है कि जब इस तरह की घटना होती है तो हम उसमें मूक दर्शक बन जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग उसका मजा लेते हैं, जो एक तरह से ये कहा जाए कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत नीचे गिर चुकी है, मर चुकी है। सोसाइटी इस लेवल पर पहुंच गई है कि हमें किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। एक तरह से मैं कहूंगा कि जब अगर वीडियो ही रिकॉर्ड ना हुआ होता तो इस घटना में कुछ नहीं होता, क्योंकि सब हाथ खींच लेते, कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं कोई सबूत ही नहीं है, तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि वीडियो सामने आया तो ये मजबूरी पुलिस की हो गई, सरकार की हो गई, कानून व्यवस्था की हो गई कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वो महिलाएं इस मामले में नंगी नहीं हुई है। हमारा समाज नंगा हो गया, हमारा कानून नंगा हो गया। The incidents occurring in our country point to a concerning breakdown, not only in the law and order situation,
but also in the collective conscience of society. Take for instance the Manipur incident. Dr. Girija Vyas, former chairperson of the National Commission for Women, states that the incident highlights not just a failure in the justice delivery system, but also a collective failure of society, the media and the government. जो मणिपुर की घटना मई महीने में घटना हुई और उसके बाद में न तो राज्य सरकार न केंद्र सरकार ने कुछ किया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सो मोटो इसमें कॉग्निजेंस लेकर के कहा कि यदि सरकार कुछ नहीं करेंगी तो हम करेंगे। मुझे खुशी इस बात की कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। 5 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला होता है कानून का कड़ा होना, दूसरा होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा होता है कि जो सामाजिक लोग हैं समाज की भूमिका, चौथा है मीडिया की भूमिका और पांचवा है कि इस पर कानून पर कार्रवाई होकर के उसकी सटीक दृष्टि से उसको देखा जाए। तो ये 5 चीज जरूरी होती है, इनमें से किसी भी एक का भी पालन नहीं हुआ। न तो समाज ने इसको देखा, देख करके अनदेखी कर दिया और न ही सरकारों ने इसको देखा। यहाँ तक कि आयोग जिसको उसी दिन महिला आयोग को भी, और मैं तो कहती हूँ इसमें ह्यूमन राइट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था और NHRC को भी सामने आना चाहिए था। The incidents we discussed today are just a glimpse of the many occurring throughout the length and breadth of the country on a routine basis. The persistence of such events challenges our collective conscience and demands that we break the silence and eradicate the culture of impunity that allows these acts to persist. These incidents raise serious questions about the effectiveness of our law enforcement agencies and the justice delivery system. How many more cases will it take for the law to finally address the plight of women in our country and take decisive steps to ensure their safety and uphold their rights?